So in today's class, we'll be solving May-June 2023, Paper 1, Variant 1. Question number 1 says the electron micrograph shows onion root cells prepared using a freeze fracture technique. जिसमें आपका सेल को फ्रीज किया जाता है and then उसको break down किया जाता है. The cells were quickly frozen and then physically broken apart. Freeze किया पहले फिर fracture किया आपके सेल को. Freeze fracture breaks apart cell along weak areas such as membranes and surfaces of your organelles. So membranes and surface, this is the key point for your question. Which statement best explains the appearance of the electron micrograph? To answer this question, आप लोगों को अपने कोर्स में जितने भी electron micrograph हैं वो याद होने चाहिए. For that, I've shared Penguin वाली A-level course book. So उसमें काफ़ी सारे electron micrograph हैं. So if you know ये किस चीज़ का electron micrograph है, आपको अभी तक पता होगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है. This is basically how your nuclear envelope looks like. This is the membrane of your nuclear envelope or nuclear membrane. These holes, these tiny, tiny punch holes, these are your nuclear pores on your nuclear envelope. Nuclear pores. If I were to magnify this is what it would look like. 2 2D या 3D करके आपको punch hole नजर आ रहे होते हैं. 3D punched holes. And these holes are your nuclear pores. Let's see what the question is asking. Which statement best explains the appearance of the electron micrograph? The cells were broken apart in the endoplasmic reticulum. This is wrong. The cell was broken apart at your nuclear envelope, your nuclear membrane. Structure S is a ribosome. This is also wrong. Structure S. The organelle is your nuclear pore. Structure S इन्होंने label किया हुआ है. These holes, ये आपके ribosomes नहीं है. These are your nuclear pores. So A and C cannot be your possible answer as well as D. A की option बच रहा है which is B. So B is your possible answer. बल्कि B is your answer. The cells were broken apart at the nuclear envelope. Structure S is a nuclear pore. This question classifies as an easy question अगर आपको अपने electron micrograph याद है. वरना फिर आपको करना नहीं आएगा obviously. Which cell structure can form vesicles? So answer this question using your group chat. Which structures are responsible for forming vesicles? If you know, substances enter your exit your cell membrane using your endocytic, yeah, exocytic vesicles, endocytic, yeah, exocytic vesicles. So yes, your cell surface membrane is making vesicles. जब आपका vesicle fuse करता है. Endoplasmic reticulum. Does it form vesicle? It also forms vesicle. How is that so? It packages protein into your vesicle and these proteins are transported to your Golgi body. Packages protein into vesicles. Yes. To be transported to Golgi body. So yes, endoplasmic reticulum भी कर रहा है. Golgi body we know, ये तो इसका function ही है कि it forms. Is my screen stuck? It forms specialized vesicle which is lysosome. So yes, Golgi body is also forming vesicles. सब बना रहे हैं vesicles. So the correct option is A. Question number 4. This is a repeating question. Almost हमने कितने papers कर लिए हैं? We have done like 8 papers. ये 8 paper है आज हमारा. And in 8 में से this question has come in your 4 papers. 8 out of 4. इतना ज़्यादा repeat होता है ये question. बस थोड़ा सा question का structure different हो जाता है, options different हो जाते हैं. But this is an example of your repeating question. So let's see क्या कह रहा है question this time. 4 students were asked. These 4 students are your A, B, C, and D. They were asked to match the function with the appearance of some cell structure in an animal cell. These functions were listed by numbers. So let's identify साथ by साथ. Synthesis of polypeptide. This is done by your RER, your ribosomes, and even your nucleus. इनमें से कोई भी possible option हो सकता है. Synthesis of lipid. This is done by your SER only. Packaging of hydrolytic enzyme that will remain in your cell. So this is done by Golgi body. These hydrolytic enzymes are packaged into lysosomes, which are your specialized vesicle formed by your Golgi body.
The appearances were listed by number. Membranes which surround an enclosed inner cavity. This is a vague statement. कोई सी भी membrane हो सकती है. कौन सी हो सकती है? ER हो सकती है. ER में you have SER and rough endoplasmic reticulum. It can even be your mitochondria. Mitochondria. It can be your chloroplast अगर they hadn't specified कौन सा cell है. They have identified animal cell है, so we won't be counting your chloroplast in there. Here you have your Golgi body as well. Golgi body की भी membranes हो सकती हैं. So this is a vague statement. W. Non-membrane bound spherical structure. एक ही structure है आपके cell organelle में which has no membrane, that is your ribosome. And we know it is spherical structure. A double membrane interspeeded with pores. So this is your, क्या हो सकता है ये? Yes, this is your nucleus. Non-membrane bound cylindrical structure एक ही होता है cylindrical which is centrioles and this is only present in your animal cell. Membrane bound sac arranged as flattened stack. This is a description for your Golgi body. एक के ऊपर एक stack बना रहे होते हैं ये and they have a cis phase facing towards your nucleus and a trans phase facing away from your nucleus and they are surrounded by a vesicle because ये vesicle form कर रहे होते हैं. So this is your Golgi body. Now जल्दी से इसको numbering भी कर लेते हैं. Golgi body Z and 3. Z3 is your Golgi body. Centrioles तो centrioles का function इन्होंने दिया हुआ नहीं है. Here you have nucleus. So X1 can be your nucleus. Non-membrane और spherical ribosomes. Ribosomes का भी इन्होंने function नहीं दिया हुआ. B3 can be your Golgi body. But Z से match कर रहा है. तो Golgi body तो obviously पहले ही हो गया है. SER. SER can be your V1. V2 sorry. So this can be your endoplasmic reticulum. कौन सी? Smooth endoplasmic reticulum. This is your V2. So we have ribosomes is matching with your, here are ribosomes is matching with your W. So this can be your W1 as well. Let's look at the option. अच्छा number 1 पे they're saying कि 1 वाला जो structure है, 1 वाला जो function है, that is of either W या Z. Z is your Golgi body and Golgi body are not synthesizing your polypeptide. So C and D cannot be a possible option. आपने पूरा cancel out कर दिया, eliminate कर दिया option C and D. Now you'll only be looking at option A and option B. Now they're saying कि जो 2 वाला structure था, 2 वाला function था, that is of V and Z. V is your ER and Z is your Golgi body. So B is wrong, Z3 होना चाहिए, वो ये रहा. So obviously the only correct option is A. V2, V2 है आपका smooth endoplasmic reticulum and Z3 is your Golgi body. Which cell contain a tonoplast? Let's see. So tonoplast क्या होती है? Tonoplast is a membrane of your vacuole. Membrane of your vacuole. जिन cell organelles में you have a vacuole, उनमें obviously you have a tonoplast. Root hair. Do you have a vacuole in your root hair cell? Yes. So A, B and D are your possible option. C we won't be considering. C पे wrong लगा हुआ है तो C cannot be a possible option. Companion cell, yes, very good. Companion cell में भी होता है हमारे पास. Sieve tube element. In sieve tube elements, we have cell surface membrane, mitochondria, and ER, endoplasmic reticulum. इनके अलावा और कोई सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते. तो ऑब्वियसली वैक्यूल ही नहीं है तो टोनोप्लास्ट भी नहीं होगी. दिस इज करेक्ट. तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज डी. अभी तक आपको पता चल गया, 4 आपको देखने की जरूरत ही नहीं है. बट लेट्स सी. एंडोडर्मिस सेल में यू डू हैव tonoplast या vacuole. Which organelles found in animal or plant cell are surrounded by a double membrane? So double membrane
Before we look at the option, let's list down the structures which have your double membrane. तीन structures हैं सिर्फ, chloroplast, mitochondria, inner and outer membrane, and your nucleus. सिर्फ इन तीन structure में you have double membrane. Chloroplast, mitochondria, vacuoles. Vacuole is a single membrane and इसी membrane का नाम है tonoplast. Chloroplast, mitochondria, and nuclei. Yes, very good, Ifra. B is your correct option. Let's see the mistakes in C and D. C and D में वही mistake की हुई है. Vacuoles में you do not have double membrane. This also classified as an easy question. Question number 6. Some scientists think that mitochondria evolve from bacteria that enter a cytoplasm. So they are basically referring to your endosymbiotic theory. Endosymbiotic theory, which states that your mitochondria and chloroplast used to be prokaryote, which were engulfed by your eukaryotic cells, and they started to live in a symbiotic relationship. ये आपको याद होगा, आपने P2 के लिए याद की होगी. अच्छा, that enter the cytoplasm of a different cell and were able to survive there. किस तरह survive कर रहे थे? Through a symbiotic relationship. एक दूसरे को benefit दे रहे थे. Which structural features of mitochondria support this hypothesis? So basically going to look for features which are common between prokaryotes. Prokaryotes are also your bacterial cells. So prokaryotes are bacteria and mitochondria. इन दोनों में जो जो features common होंगे, that will be providing the support for this hypothesis. Folded inner membrane. This is not seen in your prokaryotes. आपने पढ़ा prokaryotes के structure में कभी भी कि they have a folded inner membrane. So obviously this will be wrong. एक ही possible answer बन रहा है, हमें शुरू में पता चल गया कि आंसर क्या होगा, which is D. Circular DNA. This is true. Your prokaryote, your mitochondria, and your chloroplast have their own circular DNA. 70S ribosomes. This is also true. In तीनों structures में you have 70S ribosomes. Whereas your eukaryotic cells, unme you have 80S ribosomes. So the correct option is D. This also classifies as a easy question. What is present in all viruses, all prokaryotes, and all eukaryotes? So this is a repeating question. ये भी repeat हो रहा है आपका दोबारा question. So make sure you remember the logic for this question. Ribose. Ribose will only be present in your RNA wala virus. You do remember, yes, mitochondria has a folded inner membrane, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट है उसमें नहीं होता. Let me show you. इस तरह की folded membrane होती है ना. This increases the surface area for anaerobic respiration ताकि ज़्यादा ATP बने. ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. Mitochondria. This is your outer membrane, and this one is your inner membrane. So folded internal membrane, folded हुई भी है. Yes. We will be looking at the common structures between prokaryote and mitochondria. Common नहीं है ना दोनों में folded membrane. Mitochondria में तो है, लेकिन prokaryotes में you do not have a folded membrane. Common, वही मैं बता रही थी आपको, common structure between prokaryotes and mitochondria. जो जो common होंगे, that will be the one supporting your hypothesis. सही है? Folded membrane, you only have it in your mitochondria. Prokaryotes में नहीं होती. इस तरह होते हैं prokaryotes. Double membrane तो होती है, but it's not folded. What is present in all viruses, all prokaryotes, and all eukaryotes? So if you remember the structure of your viruses, they can either be DNA viruses या फिर RNA viruses at a time. इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता इनके पास. और RNA viruses. Let's see what the question is saying. Option A says ribose. So ribose is present in your
Ribose is a pentose sugar for your RNA molecule. ये आपको याद होगा structure. Ribose will only be present in your RNA virus. So this cannot be your correct option. Will only be present in RNA virus. DNA virus में तो नहीं होता. So this is not a common structure in all viruses. Virus. Deoxyribose. Same logic as deoxyribose will only be present in your DNA viruses. Cytosine. Now this is a common structure. कैसे? If you remember, your DNA and RNA molecules are made up of four nucleotides, four nitrogenous bases, which are A, T, G, C in your DNA molecule and AUGC in your RNA molecule. तो इनमें common क्या है? G, C and A. Adenine, guanine and cytosine are the common bases. तो इसका मतलब ये हुआ कि these three bases will be present in all your viruses, चाहे वो DNA वायरस हो या RNA वायरस हो. तो अगर इसकी जगह इन्होंने लिखा होता adenine या guanine भी, so this was going to be your correct option. Thymine is again only present in your DNA viruses. Thymine की जगह you have uracil in your RNA viruses. कल भी question आया था ये, the paper which we were doing yesterday. उसमें they had given the option adenine. So this is a repeating question. Let me show it to you. Here, which is present in all viruses. Same वही question था, बस adenine यहाँ पे इन्होंने mention किया हुआ था. Is this clear? Okay, question 8. The table shows some steps that can be made in carrying out the Benedict test. Which combination of steps is required to carry out a semi-quantitative test on a reducing sugar solution? Acha. Standardized volume of Benedict solution and volume of test solution. This question is from your paper 3. Paper 3 में आपने experiment किया होगा तो आपको जो steps याद होंगे उसी के हिसाब से you will be following this question. So if you remember lab में आपको एक standard volume मिल रही थी of your Benedict solution and standard volume मिल रही थी आपके food sample की, एक particular volume मिल रही थी. So yes, this is correct. B and C, D cannot be your possible options. फिर you were boiling it with hydrochloric acid and then neutralizes alkali. No, this is not true. This was happening in your non-reducing sugar. Non-reducing sugar में आप ये step perform कर रहे थे. So this is wrong. Standardized boiling time with Benedict solution and compare final color with numbered color standard. This is also true. If you remember, Benedict solution आपको different color देता है. So at a fixed time interval, after 5 minutes, after 10 minutes, after 15 minutes, at a fixed time interval, आप लोग check कर रहे थे the color of your solution. And फिर आप table बना रहे थे and you were writing the colors. And if you remember, plus करके कुछ कर रहे थे for the concentration of your solution. So yes, this is also true. C is the only possible answer. इससे हमें पता चलता है if you want to clear your paper 1, you should know the concepts of your paper 3 as well as the concepts of your paper 2. पेपर 2 की थ्योरी पता होनी चाहिए, पेपर 3 के प्रैक्टिकल्स पता होने चाहिए. This was a moderate question. Question 8. This is a repeating question. ये multiple times आ चुका है ये question. In 2023 भी आया है, 2022 भी आया है. So the question says, the diagram shows three examples of different bonds. Before we look at the question, let's जल्दी से identify कौन से bonds बन रहे हैं. Hydrogen and oxygen. Bond between your hydrogen and oxygen is known as hydrogen bond. If you look at this is your carbonyl group, this is your amine group, and the bond formed between your carbonyl and amine group is known as peptide bond. So this is your peptide bond. Between sulfur and sulfur, this is your disulfide bond. And इसके name में ही meaning है. एक minute. Disulfide bond. Di means two, sulfide means sulfur. तो दो sulfur के बीच में जो bond होता है that is known as disulfide bond.
Which bonds hold the second structure of protein together? If you remember the secondary structure of your proteins, so usme you had alpha helix and your beta pleated sheets, and these were held together by your hydrogen bonds only. Peptide bond is present in your primary structure. Disulfide is present in your tertiary as well as in your quaternary structure. So the only possible answer is bond 1. C. Is this clear? WhatsApp पे लिख के बता दो. Question 10. Insulin is a globular protein. Insulin hormone भी होता है आपका, which is controlling your blood glucose concentration. It is involved in cell signaling. It is transported in the blood plasma from the cells that synthesize it to a target cell. So basically they are saying कि जहाँ से insulin release होता है वहाँ से ये travel करता है in your bloodstream. So obviously this is released by your endocrine gland and then it reaches its target cell. A molecule of insulin contains 6 sulfur containing amino acids and has 2 polypeptide chains. ये सब चीजें you'll be studying in your A2s in your homeostasis chapter. Which statement about insulin are correct? अच्छा. Before we move on, let's analyze the information given to us. 2 polypeptide chain. इसका मतलब क्या हुआ? It has a कौन से type का structure? It has a quaternary structure. What bonds are present in your primary structure? In your primary structure, you have peptide bond. Primary structure की definition क्या थी? Sequence of amino acid. Sequence of amino acid. अगर मैं आपको visualize कराना चाहूँ, this is what your amino acid sequence look like. अब दो amino acids are joined together by your peptide bond. So in your primary structure, you only have your peptide bond. And paper 1 के लिए पता होना चाहिए आपको the nature of your peptide bond. Your peptide bond are covalent bond. Same goes for your disulfide bond. Disulfide bonds are present in your tertiary and quaternary structure. These are also your covalent bonds. ये दो ही bond हैं जो covalent in nature होते हैं. So this is also your covalent bond. इसका एक क्वेश्चन आया था कल के पेपर में भी saw, तो मैं वो रिवाइज करा दूंगी आपको at the end of the class. अच्छा, we were analyzing the information given to us. 2 polypeptide chain tells us कि insulin का molecule it has a quaternary structure. फिर they were giving the information कि आपका insulin is a globular protein. If you remember your course, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं या दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, globular and fibrous. What was something special about your globular protein is, एक मिनट, कि they are soluble एक तो, एंड वो solubility क्यों आ रही होती है? क्योंकि जो आपकी हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स होती हैं वो आपके प्रोटीन के बाहर की तरफ होती हैं. लाइक लेट्स से दिस इज योर ग्लोबुलर प्रोटीन. जितनी भी आपकी हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स हैं वो बाहर इस तरह नजर आती हैं. तो ये जो आर ग्रुप्स होती हैं ये रिएक्ट कर लेती हैं विद योर वाटर मेकिंग योर प्रोटीन सॉल्युबल इन नेचर. So we are going to write the hydrophilic R groups outward and hydrophobic R groups वो अंदर की तरफ होती हैं. This is why your globular protein are soluble in nature. ये आपने information analyze कर ली. फिर उसके बाद you're going to move towards your option. An insulin molecule has a quaternary structure. This is true. Why is that so? क्योंकि दो polypeptide chain है. Insulin polypeptide are held together by 6 disulfide bonds. This is wrong. इन्होंने बोला है हमें कि 6 sulfur containing amino acid है. 6 disulfide bonds नहीं बोला इन्होंने. जो भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें दे हैव सल्फर. अब जरूरी नहीं है दी सल्फर आर मेकिंग और डाइसल्फाइड ब्रिजेस द डाइसल्फाइड बॉन्ड. So this information is technically wrong. Amino acid with hydrophobic R groups would be found in the center of an insulin molecule. This is true. Hydrophilic R groups आपके बाहर नजर आएंगे, whereas your hydrophobic, your non-polar R groups वो आपको अंदर की तरफ नजर आएंगे in the center of your insulin molecule. So option 2, 1 and 3 are correct. 2 is wrong. 1 and 3 स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस यूजुअली गलत होते हैं. तो इट इज़ नेसेसरी कि आप एनालाइज करें इन्फॉर्मेशन को जो दी हुई क्वेश्चन में अच्छी तरह. Question 11. Which statement correctly explains why blood plasma can be maintained at a stable temperature?
सिक्स सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड्स, अगर इनको इनसे हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने भी होते तो इससे कितने बनते हैं? इफ़ यू रिमेंबर द अमाइनो एसिड्स इन योर कोर्स, किसके अंदर होते हैं सल्फर बॉन्ड्स, सल्फर ग्रुप्स इन योर सिस्टीन। सिस्टीन अमाइनो एसिड है जिसके अंदर यू हैव सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है बेसिकली। अच्छा, तो दो सिस्टीन मॉलिक्यूल को ज्वाइन होना होगा टू फॉर्म योर डाइसल्फाइड बॉन्ड। DS लिख रही हूँ फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड, विच मीन्स अगर आपके पास सिक्स सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है तो सिर्फ थ्री डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे, थ्री डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन टोटल। तो अगर यहाँ पे थ्री लिखते सिक्स की जगह, फिर ये स्टेटमेंट फिर भी करेक्ट होता। Which statement correctly explains why blood plasma can be maintained at a stable temperature? So this is your learning वाला question. इसमें कोई logic वॉजिक नहीं है, and the reason is it has a high specific heat capacity. If you remember the properties of water in your biological molecules, तो वो यहाँ पे apply हो रही है. This is also easy question क्योंकि इसमें आपकी learning required हुई from your P2 वाला course. Question 12. Which region of the graph shows the activation energy of an enzyme catalyzed reaction? We know enzymes आपकी क्या कर रहे होते हैं? They are lowering your activation energy. So in this graph you can see visibly कि इसकी जो activation energy है वो low हो गई है. ये आपका enzyme वाला reaction होगा. Now basically you have to find out the labeling. ये आपका C is the labeling for non-enzyme catalyzed reaction without the enzyme, and B is the activation energy ये रही EA. I don't think इसमें कोई इतनी rocket science है. B is your correct option. The graph shows the effect of an increasing substrate concentration on the rate of enzyme catalyzed reaction. From the graph you can identify कि ये competitive inhibitor है या non-competitive inhibitor है. इसके लिए मैंने आपको I think पेपर नंबर 1 में कुछ key pointers दिए थे. तो competitive inhibitor में क्या हो रहा होता है? I think पेपर 2 में दिए थे. Let me see. ये रहा. In your competitive inhibitor आपका जो Vmax होता है वो unchanged रहता है. Unchanged रहता है but it is reached at a high substrate concentration. एक मिनट कॉपी कर लेते हैं. If you look at this, आपका Vmax सेम रहा है इनहिबिटर ऐड करने के बाद भी. इस रिएक्शन में आपका Vmax सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट. दिस मीन्स कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको कंपेटिटिव इनहिबिशन का दिया हुआ है. अगर नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन होती तो आपका Vmax जो है वो डिक्रीज कर जाता. किस तरह करता है? आपका फिर ग्राफ इस तरह नजर आता. Vmax विजिबली डिक्रीज कर दी हो गया है. So this is a graph for your competitive inhibition. Competitive inhibition कैसे हो रही होती है? The shape of your enzyme active site and the shape of its substrate molecule is identical, complementary होती है. Line P represents the result when the enzyme is used at its optimum pH and optimum temperature and without an inhibitor. वो तो हमें पहले से पता चल रहा है कि P is the original activity of your graph and इसमें कोई inhibitor add नहीं हुआ है. Line Q represents the result when the reaction conditions are changed. And क्या change आया है? They've basically added competitive inhibitor. Which description of the changes to the reaction condition could result in line Q if all other conditions were kept the same? Add an inhibitor that attaches to a site other than active site. So this is a condition for your non-competitive inhibitor जिसमें आपका जो inhibitor था that was going and attaching to your allostatic site of your enzyme. So this cannot be a possible explanation. Add an inhibitor that has a similar shape to the substrate. This is true. Competitive inhibitor में होता है ऐसा. Add an inhibitor that blocks the active site of the enzyme. This is also true. आपका जो competitive inhibitor होता है that binds to your active site and temporarily थोड़े से time के लिए reversible reaction होता है and it blocks the active site of your enzyme. Carry out the reaction at a higher temperature. This is wrong. Why is that so? आपकी जो inhibition है that can only be reversed
अगर आपके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की गई है, टेम्परेचर से रिवर्स नहीं होती है. So I hope you guys remember these concepts. Why is this wrong? Inhibition is reversed at high substrate concentration. So your correct option is 2 and 3 only. D is the correct answer. Is this clear? I hope this is clear. I'm continuing. Which statement about cell signaling molecule is correct? Let's look at the option. One type of receptor molecule. Can you write your question on the WhatsApp? थोड़ी सी voice unclear आ रही है. I think you're asking about point 4. The reaction at a higher temperature. इसकी वजह से ऐसा ग्राफ नहीं आएगा. If you remember the factors affecting enzyme, तो इसमें you guys आप लोगों ने ड्रॉ किए होंगे ग्राफ. टेम्परेचर वाला ग्राफ वैसे भी थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है. कुछ इस तरह करके नज़र आता है. हाँ, इस तरह करके नज़र आता है. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ एक्टिविटी कुछ इस तरह नज़र आएगा. तो वैसे भी ये ग्राफ फॉर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता. अच्छा, which statement about cell signaling molecule is correct? One type of receptor molecule will recognize all ligands in the body. So your cells are the ones that are secreting your ligand. This statement is wrong क्योंकि specific ligand binds to a specific receptor. हर ligand के लिए there is a specific receptor. So all ligands cannot bind to one type of receptor. Let's say अगर आपका ligand का shape इस तरह है, फिर दूसरे ligand का shape इस तरह है, दूसरे ligand का shape इस तरह है, तो सबके लिए you will need a different type of receptor. इस ligand के receptor का shape कुछ इस तरह होगा, इस तरह. Different type of receptor, a specific receptor for each type of ligand. So this statement is correct. The binding of a ligand may cause a change to the shape of the receptor. This is true. इसी की वजह से your enzyme cascade reaction starts. जैसे ही आपका ligand आता है, when it is secreted from your cell, it binds to the receptor on the cell surface membrane. जैसे ही वो receptor पे bind करता है, the shape of your receptor changes a bit. थोड़ा सा change होता है, जिसकी वजह से आपके cells में जो enzyme होते हैं वो activate होते हैं, and then वो carry out करते हैं the process required. The receptor for ligand are always found inside the cell. This is true. Sorry, this is wrong. Inside the cells नहीं होते. दो type के ligands होते हैं. One of them is cytoplasmic receptor, which is found inside your cell, and the other one is cell surface membrane receptor, which is found on the surface of your cell. Cell surface membrane या फिर outside your cell, which is why this option is wrong. Partially true है, partially wrong. The same ligand is made by the cells in the body, by all the cells in the body. The same ligand is made by all the cells. No, particular cells are making your particular ligand. For example, ligands can be hormones. ये neurotransmitter आपको पता होगा ये concept तो. So ligands can either be hormones या फिर neurotransmitter. Neurotransmitter. And if you remember, transmitter specific cell specific hormone release कर रहा होता है, specific cell specific neurotransmitter release कर रहा होता है. For example, आपका insulin hormone, it is only released by the beta या alpha cells of your pancreas. Particular cell release कर रहा है. So this option is also wrong. The correct option is B only. Four students A, B, C, and D observe plant epidermal cells that have been placed in a concentrated sucrose solution for 30 minutes. So this is the homework. हमारा पैटर्न होता है कि हम we do 35 questions in class and 5 questions हमारे homework होते हैं. So this is the very first question which is going to be a homework. Easy question है. This classifies as a moderate question. If you find any difficulty in it, WhatsApp कर देना, I'll explain it to you. The table compares the surface area to volume ratio of 5 agar blocks
that differ in dimension but which all have the same volume. Dimension same है, volume dimensions different है, volume same है. The Agar box can be used to measure the efficiency of diffusion, where efficiency is measured as the time taken for a dye to reach all parts of the block. First लंबा question है. Length दी हुई है, width दी हुई है, height दी हुई है, surface area, volume, and then the ratio of your surface area to volume ratio. So if you remember the concept कि अगर surface area to volume ratio increases, the efficiency of your diffusion also increases. Efficiency of diffusion increases. सबसे लीस्ट एफिशिएंसी होगी आपके 8 मिलीमीटर वाले ब्लॉक में. So if you see the surface area to volume ratio is very low. So least efficiency इसमें होगी. Most efficient will be your fourth one, 32 millimeter wala, because इसका surface area to volume ratio is very high. ये हमने सारी चीजें analyze कर ली from the question information given in your question. Which prediction can be made about the way in which the size and dimension of this block affect the efficiency of diffusion? Now, Q efficiency of diffusion is very high for fourth wala block. If you look at this dimension, this is very low, 0.5 centimeter. तो सारा diffusion इसी dimension के through हो रहा होगा. Whereas this, इसके पास ये सबसे highest है, and आप इसके through भी predict कर सकते थे कि इसका surface area to volume ratio would be least. The efficiency of the diffusion will decrease as the width of a block increases. Why is this wrong? जैसे आपकी width decrease हो रही है, the efficiency increase हो रही है. ये आपने अब observe करा यहाँ से. तो अगर यहाँ पे decrease लिखा होता तो ये option सही होता. The efficiency of diffusion will increase as the height of the block increases. As the height of the block decreases. Again, this is wrong. The efficiency of diffusion will increase as a block of fixed volume is flattened. Flatten का मतलब decrease in height. एक चीज आपके पास ऐसी थी, आपने इसको फ्लैट कर दिया बाय पंचिंग इट या कुछ भी करके, तो इसकी हाइट डिक्रीज हो गई. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यही आपका पॉसिबल ऑप्शन है. द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन विल डिक्रीज एज अ ब्लॉक ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज इलोंगेटेड. इलोंगेटेड मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द सेल साइकिल इंक्लूड्स माइटोसिस. ये हमें पता है. एंड माइटोसिस के स्टेप आप किस तरह याद करते हो? बाय और ट्रिक जो कि है पी मैट. P mat stands for prophase, metaphase, anaphase, telophase, followed by your interphase and cytokinases. What are the features of this type of nuclear division? Acha. So we're going to look at the features of your mitosis, I think. Let's see. Form cells of equal size to the parent cell. Is this true? आपका जो parent cell होता है divides into two. Equal size तो हो ही नहीं रहा. Cell आपका half हो जाता है in your mitosis. फिर वो eventually grow करता है. So this is wrong. Forms genetically identical nuclei. This is the most common or famous function of your mitosis. So this is true. Semi-conservative replication of DNA. ये mitosis में नहीं हो रहा होता. It happens during the S phase of your interphase. So this option is also wrong. ये mitosis का feature नहीं है. So the correct option is 2. This also classifies as an easy question. Question 14 is your 18 is your homework. Let's see question 19. Which statement about messenger RNA is correct? Messenger RNA. So messenger RNA में आपकी कौन सी bases होती हैं? A, U, G, C bases. In eukaryotic cell, mRNA is made up by removing exons from the primary RNA translator. So do you remember the process of your post-transcriptional modification? इसमें क्या हो रहा था? Transcriptional. WhatsApp पे लिख के बता दो. Modification.
इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, आपके जितने भी इंट्रॉन्स थे आपके जीन में, उनको निकाल रहे थे। वाइल दैट से बिकॉज दे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। यस, वेरी गुड, स्लाइसिंग हो रही होती है। यस, योर इंट्रॉन्स है रिमूव, क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये आपके अमाइनो एसिड्स के लिए कोड ही नहीं कर रहे होते। वेरेस जो आपके एक्सॉन्स होते हैं उनको रहने देते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं, एंड दीज एक्सॉन्स आर द वन विच विल बी कोडिंग फॉर योर अमाइनो एसिड। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज आपके इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो एक्सॉन्स हैं उनको रहने देते हैं। So this statement is wrong. Introns होना चाहिए था. mRNA is a single-stranded polynucleotide containing a different purine base than DNA. इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। प्योरिन बेसिस कौन सी होती है? ए एन जी। अब मुझे किस तरह पता है? थ्रू दिस चेक, प्योर एज गोल्ड। बाकी बेसिस आपकी कौन सी हो गई फिर? पैरामिडीन, पैरामिडीन। एंड कौन कौन सी बेसिस बची हैं आपकी? सी, फिर टी एंड यू, टाइरोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। And if you look at your nucleotides in your mRNA, इसके बाद कौन सी बेस डिफरेंट होती है? यूरेसिल वाली। एंड यू नो यूरेसिल इज अ पैरामिडीन बेस। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? कट, प्योरस गोल्ड एंड कट। सो यूरेसिल इज अ पैरामिडीन बेस, यहाँ पे पैरामिडीन होना चाहिए था, विच इज वाई दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। mRNA contains molecule contains ribose sugar joined to phosphate group by phosphodiester bond. Ribose sugar होती है in your RNA molecule, so this sentence is correct. The monomers of mRNA contains a phosphate group deoxyribose sugar. This is wrong. Deoxyribose sugar आपके DNA molecule में होती है, and ribose sugar जो कि pentose sugar होती है, that is present in your RNA molecule. कितने RNA? You have your tRNA, ribosomal RNA, and mRNA. इन तीनों में you have ribose sugar. So this was also a easy question. Which structures are involved in transcription only? जल्दी से recap करो transcription का process. DNA template strand. This is true. इसी के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, इसी को आप बेसिकली ट्रांसक्राइब कर रहे होते हो। एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन योर टीआरएनए, एंड इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस, टीआरएनए आर प्रेजेंट इन योर ट्रांसलेशन का प्रोसेस, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन। तो टीआरएनए पे क्रॉस आना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज हेल्पिंग इन योर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो एक क्रॉस होगा, बाकी टिक टिक। करेक्ट ऑप्शन इज बी। दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। One gene provides the code for the production of which type of molecule? One gene provides the code. Okay, amino acid. They're asking for the code for the production of which type of molecule? Amino acid is a triplet code या फिर codon. And you know genes code for a polypeptide. So if you remember the concept, gene code for a polypeptide. DNA तो आपका जीन बना रहा होता है. So the correct option is D only. If you remember the definition of a gene, तो आपके फौरन आंसर पिक कर लेते आप कि your correct option is D. This is also an easy question. किस तरह? Let's see. The table shows some mRNA codon that code for a certain amino acid. तो आपको ये ट्रिपलेट कोडॉन कोड दिया हुआ है, सारे कोडॉन, सॉरी यहाँ पे mRNA कोडॉन दिए हुए हैं, अनरेलेवेंट अमीनो एसिड्स भी दिए हुए हैं जो कोड कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं। A DNA template strand has a base sequence shown. तो अगर हमें इसको स्प्लिट करना होता है, हम 3 के सेट्स में करते हैं स्प्लिट। 3 के सेट्स में करते हैं, किस तरह करते हैं? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, थर्ड, फोर्थ, fifth, and ये आपका sixth. The sixth amino acids are present in this sequence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, if you see some mRNA codons, these are mRNA codons and यहाँ पे DNA template strand है. So basically हमें इसको transcribe या translate करना पड़ेगा अभी. Let's see the question. What would be the change in the amino acid if the first base
In the fifth DNA triplet was substituted for an A base. So basically base substitution हो रही है and they are asking for the fifth DNA triplet. Fifth DNA triplet क्या है आपका GCA. इन्होंने बोला कि GCA का जो ट्रिपलेट है जो फर्स्ट बेस है दैट इज रिप्लेस बाय ACA हो गया अभी म्यूटेशन. सो GCA पे आपके पास इफ यू ट्रांसलेट इट क्या बनता CGU. CGU is coding for which amino acid? Let's see. CGU. Here arginine. So this was coding for your amino acid arginine. फिर उसके बाद बेस सब्स्टिट्यूशन हुई. बेस सब्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन जिसकी वजह से आपकी एक बेस चेंज हो गई इनटू ACA. इफ यू ट्रांसलेट ACA क्या बनेगा? A binds with your U in your mRNA, C binds with G, and A binds with U again. U. So this is basically coding for sorry, cysteine. Cytosine out there. Sorry, cysteine amino acid. So your arginine amino acid has basically changed. You're substituted, you're mutated to cysteine amino acid. Let's see the option. Alanine to cysteine, this is wrong. Alanine to threonine, this is also wrong. Arginine to cysteine, this is correct. So the correct option is C. कुछ भी नहीं करना था आपको, बस translate करना था and you had to compare it with your table given. So this also classifies as a easy या फिर थोड़ा सा moderate question, mixture of easy and moderate. Which structure contains cytoplasm with mitochondria and a nucleus? अभी मैंने आपको बताया in your phloem sieve tube you have three structures only: cell surface membrane, endoplasmic reticulum and mitochondria. तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें you do not have cytoplasm. mitochondria है, nucleus नहीं है, cytoplasm नहीं है, so C cannot be the option. Xylem vessel element, what do you think? Xylem vessel element में भी नहीं होता, dead cells होते हैं ये आपके. कंपेनियन सेल में आपकी सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, सारे सेल ऑर्गेनेल नजर आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, गोल्गी बॉडी नजर आएगा, राइबोसोम नजर आएंगे. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए. 24. What is the correct term to describe intermolecular hydrogen bonding between water molecules? If you remember the definition of cohesion and adhesion, similar molecules के बीच में जो bonding हो रही होती है that is known as cohesion due to cohesive forces. Different molecules के बीच में जो हो रही होती है that is adhesion. So the correct option is B. This is also an easy question. एक और question करते हैं फिर I'll be sending a new link to join. 25 is your homework. 26. How does sucrose move from chloroplast to the phloem? Sucrose की movement किस process में हो रही होती है? In the process of your translocation. So basically आपको जल्दी से अपने mind में recap करना है the process of your translocation. How does sucrose move from chloroplast to sieve tube? The diffusion, yes. Apoplast pathway. This happens, but this is a rare process, but it still happens. Symplastic pathway. ये भी हो रही होती है. So all three processes are happening in the movement of your sucrose. जल्दी से recap भी कर लेते हैं हम एक बार. If you remember, आपका जो hydrogen ion है, it moves out from your companion cell गलती से, and then it tries to enter back into your companion cell, but it is unable to do so. Hydrogen ion moves out. तो किस तरह एंटर करता है? विद द हेल्प ऑफ योर कोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. एंड कोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से कि मैं सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ सक्रोज को भी लेके जाऊंगी. सो बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयन एंड योर सक्रोज दोनों एक साथ इनटू योर सेल. फिर सक्रोज आपको डिफ्यूज करता है इनटू द नेबरिंग सेल. तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी हो रही होती है एंड दिस डिफ्यूजन कैन ईदर अकर थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे या फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे. करेक्ट ऑप्शन इज ए. How are companion cells involved in loading sucrose into the phloem sieve tube elements? Companion cell. Actively through co-transport protein and passively through plasmodesmata. इसमें हमें दोनों पॉइंटर सही नजर आ रहे हैं. Actively through co-transport protein and plasmodesmata के थ्रू जो प्रोसेस हो रहा होता है या मूवमेंट हो रही होती है दैट इज पैसिव.
There's no energy required for the movement. सेल आराम से कम्युनिकेट कर सकता है विद योर एडजेसेंट सेल, बी से जाके जो भी इसको कम्युनिकेशन करनी होती है, इट कैन easily do it with the help of your plasma. No transport proteins are involved, no energy is involved. Passive, passively through co-transport proteins only. पहली बात, पैसिवली नहीं हो रही होती, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, so this is also wrong. Actively through plasmodesmata. Plasmodesmata के through you have passive movement. So again, the statement is wrong. Only correct option is A. But if you remember, आपकी जो DNA में bases होती हैं, in your DNA molecule you have four nucleotide bases, A, A, T, G, C. A is your adenine, T is your thymine, G is your guanine, and C is your cytosine. ये था cytosine and मैं गलती से cytosine बोल रही थी. I meant to say cysteine. Cysteine आपका amino acid है. Cytosine is your nucleotide base. Whereas in your RNA का molecule you have A, U, G, C bases. A is your again adenine, U is your uracil. So DNA and RNA में सिर्फ एक ही difference होता है base का कि instead of T you have U. Yes? Are you saying something? This is your homework. Here we did this. So I was basically revising this concept कि DNA में कौन सी nucleotide bases होती हैं and RNA में कौन सी nucleotide bases होती हैं. I just saw your question कि what is cytosine. I meant to say cysteine. Cysteine is your amino acid, but cytosine is one of the bases in your DNA and RNA molecule. So in your DNA molecule, you have four bases: A, T, G, C. A is your adenine, T is your thymine, G is your guanine, and C is your cytosine. This was your cytosine. In RNA, you have AUGC. A is your adenine, U is your uracil, and वही दो bases guanine and cytosine. The only difference in your DNA and RNA molecule is the bases. Thymine की जगह ही आप uracil in your RNA. ये difference होता है. And this was a cytosine. Question 28. The photomicrograph shows red blood cells as seen using a high power light microscope. So these are your red blood cells. Before we move on, जल्दी से let's identify. So if you look at this structure, इसमें काफी large nucleus है compared to the cytoplasm. थोड़ा सा cytoplasm है. So obviously this is going to be a lymphocyte. Lymphocyte की identification क्या होती है कि it has a very large nucleus. If I were to draw a simplified diagram, कुछ इस तरह नजर आता है. Big nucleus and थोड़ा सा cytoplasm. ये रहा आपका cytoplasm. So cell 1 is your lymphocyte. And why is that so? क्योंकि इसकी nucleus बड़ी है. Cell 2, cell 1 is your lobe nucleus. अगर if you look at the structure, इसकी nucleus में lobes हैं. So this is going to be a neutrophil. Let's see the option. Which row correctly identifies the different types of cell, white blood cells? After course में you'll be studying 5 white blood cells: macrophages, lymphocytes, neutrophils, monocytes, ये सारे. जिसमें से monocytes and your neutrophils are your phagocytic activity कर रहे होते हैं. So one we saw was a neutrophil. ये रहा. It is only visible in your option C. फिर 2 is your monocytes and 3 is your lymphocytes. So ये वाला ही option सिर्फ match कर रहा है. C is the correct option. So make sure you remember the electron micrograph, photomicrograph, and hmm, monocyte and lymphocyte की differentiation. Let me show you. Paper 2 में हमने ये revise किया था. Here, these are your 5 white blood cells. This is your monocyte. Monocyte में you have a bean shaped nucleus. लेकिन अभी जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ देख रहे थे उसमें हमें बीन शेप नजर नहीं आ रहा था. So basically we had to rely on the cell structure 1 and 3 to identify 2 क्या है. So in your monocytes, they develop into your macrophages and they have a bean shaped nucleus and they are granulated. Granules से surrounded होता है.
इन योर lymphocytes, इसकी एक ही आइडेंटिफिकेशन है, लिम्फोसाइट बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी लार्ज न्यूक्लियस एंड बिल्कुल कम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म सराउंडिंग योर न्यूक्लियस। फिर यू हैड eosinophil, neutrophil and basophil. इन तीनों में you have lobes. Neutrophil में you have 2 to 3 lobes in your neutrophil and it is granulated. Basophil में again you have 2 lobes and in your eosinophil as well. तो ये बहुत सारे ये तीनों बहुत सिमिलर नज़र आते हैं अंडर योर माइक्रोस्कोप। तो ये तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर पेपर 2 की तैयारी में वी डिड आई शोड यू एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें दे वर अलाउइंग यू गाइस टू आंसर कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक लिख दो, they were accepting it in your marking scheme. The two cells, white blood cells responsible for phagocytic activity were your monocytes and your neutrophils. सिर्फ ये दोनों phagocytic activity में involve होते हैं। और वो कौन सी activity होती है? Basically engulfing your foreign particles. Foreign particles को engulf करते हैं and then उनको destroy करते हैं, या अगर वायरस वगैरह होता है तो इनके antigens बनाते हैं। So if we go back, आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है 1 वाला, it could have been eosinophil, बेसोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। इन तीनों में से कोई भी हो सकता था बिकॉज इट हैज़ अ लोब्ड न्यूक्लियस एंड ये काफ़ी सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से, तो इनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन 1 वाला, सिर्फ एक ही में इन तीनों में से एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज सी। इसी से आपको पता चल जाता है कि योर ओनली पॉसिबल आंसर इज सी। सही है। ओके, प्लान डायग्राम्स ऑफ 2 blood vessels आर शोन। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन सी वेन है कौन सी आर्टरी है। इफ यू लुक एट दिस, इसका विजिबली जो लूमेन डायमीटर है दैट इज वेरी ज़्यादा compared to the diameter of your walls. So obviously this is going to be your vein. And काफ़ी irregular shape भी है इसका। Whereas this, इसका थोड़ा सा narrow lumen है, this is going to be your artery. ये हमने establish कर लिया 1 and 2 क्या है। 1 is your artery and 2 is your vein. 1 is your artery and 2 is your vein. तो ये आपको एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है which is B. आपको बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज हाउ यू गोइंग टू सेव टाइम ड्यूरिंग योर सीआई एग्जाम, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमने इसी तरह इसको आइडेंटिफाई कर लिया। बट लेट्स सी बाकी ऑप्शंस एज वेल। 3 3 आपको क्या नज़र आ रहा है? 3 इज योर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर आपने ये इसकी तैयारी नहीं करी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की, तो मैंने पीडीएफ भेज दी है ग्रुप पर, ब्लू वाली बुक ए लेवल कोर्स बुक की। उसके अंदर ये सारी डायग्राम्स बनी हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड यू नो ट्यूनिका एक्सटर्ना में यू हैव कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स, भर भर के कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ये आपको सिर्फ नज़र आ रहा है सी एंड बी। 4 इज योर ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली है, दिस इज योर ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में यू हैव स्मूथ मसल्स एंड एक्सटर्नल इलास्टिक टिश्यूज। पेपर 2 की प्रिपरेशन में हमने रिवाइज किया था, स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक टिश्यू। फिर 5 इज योर ट्यूनिका इंटिमा, सबसे इनर वाली। लेकिन अगर वेन की देखा जाए तो ये एंडोथीलियम काउंट होगी। एक मिनट, या एंडोथीलियम ही काउंट होगी। ट्यूनिका इंटिमा in which basically refers to the endothelium of your cell. Endothelium of your cell. So yes, ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक ही क्लियर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सी आर्टरी कौन सी वेन है। क्वेश्चन 30,
What are found in blood and tissue fluid? This is easy question. Blood में you have carbon dioxide as well as in your tissue fluid. Fatty acid ये भी होते हैं, white blood cells भी होते हैं, and proteins भी होते हैं. कौन से वाले? Small proteins only. टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन वाले टॉपिक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा similarities between your blood and tissue fluid or as well as the differences. सही है. So this was also an easy question. 1, 2, and 3 and 4. Question 31. Which reactions would be slowed down by an inhibitor of carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase कहाँ पे present था? It was present in your red blood cell, and this is basically an enzyme present in your RBC. It was helping in the transport of your carbon dioxide. So carbonic anhydrase was catalyzing these two reactions. Carbon dioxide reacts with water in the presence of carbonic anhydrase. फिर आपका जो acid था, this acid bicarbonate acid was dissociating into hydrogen ion and bicarbonate ion. सही है? So 2 and 3 are the only possible answers for this. Which sequence of the latter correctly identifies the order of event during the cardiac cycle? Okay, so ये पूरा process है sinoatrial, then sinoatrial node, you have your atrioventricular node AVN, you have your Purkinje tissues की वो वाला process है. जल्दी से recap कर लेते हैं. किस तरह start होता है excitation? पहले आपका sinoatrial node से start होता है सारा process, है ना? आपका sinoatrial nodes are located in your atrium, तो वहाँ से सारी excitation travel करती है. Yes. So your excitation travels from a sinoatrial node, जिसकी वजह से your atrial walls they will contract. So atrial wall contraction is in your T, your first, your second. Moderate question है, अगर आपको process याद होगा तो आपके लिए बहुत easy होगा ये. फिर B, wave of excitation enters your atrioventricular node. Yes, V. This is present in your ventricles. B आ गया. Atrioventricular node. Now this wave of U. Yes, very good. थोड़ा सा delay होगा impulse ताकि to make sure that your atrium contracts before your ventricles. So U. फिर W. Wave of excitation will pass down to your Purkinje tissues, and Purkinje tissues are present at the apex of your heart. Heart का बिल्कुल bottom वाले part पे, जिसकी वजह से your ventricles will contract. Why? So corresponding to this process, V के बाद you should have U. So this is wrong. X के बाद you should have T. This is wrong. V के बाद you should have V U. फिर W Y X T. So this is correct. यही आपका ऑप्शन है. D में क्या मिस्टेक है? X के बाद you have V. T होना चाहिए था. इस तरह एक एक करके एनालाइज करना है आपने. 36. Um, 36 is also an easy question. बस इसको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. The diagram gives information about blood pressure in the left side of the heart during the cardiac cycle. Before we look at the options, जल्दी से identify कर लेते हैं. At position 1, 2, 3 and 4, कौन सी ventricle open होती है, कौन सी close होती है. I'm listing it down here ताकि अगर आपको learning करनी हो आप यहीं से कर लो. At point 1, आपकी atrioventricular wall close होती है. Point 2, your semilunar wall they're open. At point 3, your semilunar wall closes. And at point 4 your atrioventricular wall open. तो इस तरह याद कर लो. 1 पे AVO, सॉरी AVC, AVO, क्लोज ओपन. कौन सी? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. 2 and 3 पे सिमिलर हो रहा होता है. सेमिलूनर ओपन, सेमिलूनर क्लोज. यू भी ऑपोजिट है एंड यू भी ऑपोजिट है. एक क्लोज हो रही है, एक ओपन हो रही है. एक ओपन हो रही है, एक क्लोज हो रही है. तो कोई ट्रिक निकाल लो याद करने की. वॉल्स ओपन एंड क्लोज एट द पॉइंट नंबर
विच रो आइडेंटिफाई द वॉल्व ओपनिंग और क्लोजिंग एट द पॉइंट नंबर्ड। ये हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। एट 1 you have your atrioventricular valve closed. Atrioventricular valve closes at 1. तो ये सिर्फ हमें डी में नज़र आ रहा है। एंड आप क्या करोगे, जल्दी से डी को मार्क कर लोगे टू सेव योर टाइम। बाकी ऑप्शंस को भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू, बट वी नो कि 1 पे योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इज क्लोज और वो एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है। अच्छा, दिस इज योर होमवर्क। आई थिंक मैंने अभी तक एक ही दिया है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। Which statement about all bronchioles are correct? Your bronchioles have epithelium. This is correct. Your bronchioles have goblet cells. This is not correct क्योंकि अगर goblet cells म्यूकस सिक्रीट करने लगेंगे तो डिफ्यूजन डिस्टेंस कम हो जाएगा, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। दे हैव मसल टिश्यू, यस कौन सी टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू। So this was a moderate question. Correct options are 1 and 3 only. The diagram shows some of the pathogens that can cause disease in humans and some of the ways they are transported. Acha. The contaminated water. Mode of transmission is contaminated water, mosquito bite, cough and sneezes. Mosquito bite किसके थ्रू होता है, मलेरिया के थ्रू। कफ एंड sneezes, this refers to your tuberculosis. Now your pathogen can either be bacterium, protoctist या फिर virus. What is the correct pathogen and method of transmission for malaria? Malaria is caused by your protoctist. तो X2, इसमें कुछ डिफिकल्ट था? C. सही है, pathogen for malaria is protoctist. Some of the processes which result in the formation of a population of bacteria that are resistant to a new antibiotic are listed. What is the correct order of these processes? Let's see एक एक करके. Change in reproduction success, increase in frequency, increase in genetic variation, random mutation occurs in your bacterial DNA. So yes, random mutation से start होता है आपका process. 4 is your पहला step. अब हमने डिटरमिन कर लिया कि पहले रैंडम म्यूटेशन से स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस। लेट्स से आपको ये बातें नहीं पता, ये प्रोसेस नहीं पता, तो ट्राई द एलिमिनेशन मेथड ऑन योर एमसीक्यू। वी जस्ट डिटरमिन कि 4 सबसे पहले स्टार्ट होगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शन। यहाँ पे 1 है, दिस इज रॉन्ग। 2 है, दिस इज रॉन्ग। 3 है, दिस इज रॉन्ग। एक ही ऑप्शन है एंड इस क्वेश्चन में आराम से आपका एलिमिनेशन मेथड लग गया। पहले आपके बैक्टीरियल डीएनए में रैंडम म्यूटेशन होती है, देन दैट म्यूटेशन इंक्रीजेस जब आपको बैक्टीरिया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता है, तो इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ योर बैक्टीरिया एंड देन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रेजिस्टेंस अलील इन द पॉपुलेशन। तो 4 होगा पहले, फिर आपका 3 होगा, फिर 1 होगा एंड देन 2 होगा इन द एंड। ये आपकी एमसीक्यू आराम से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है। 38 is your homework. 38 is moderate and easy दोनों। इतनी लंबी कहानी दी हुई है ओनली टू इंटिमिडेट यू, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। एक हिंट दे देती हूँ, जोन ऑफ इनहिबिशन बेसिकली मीन्स कि आपका बैक्टीरिया किल हो गया या इरेडिकेटेड हो गया। बैक्टीरिया इज किल्ड या फिर इरेडिकेटेड। Which blood cell type does not recognize, engulf and digest non-self particles? पहले तो identify what is non-self particle. 38 I was saying is a homework एंड इसमें मैंने एक हिंट दे दी है कि जोन ऑफ इनहिबिशन बेसिकली मीन्स कि आपका बैक्टीरिया किल्ड हो गया है, इरेडिकेटेड हो गया है। दिस इज योर जोन ऑफ इनहिबिशन एंड दिस बेसिकली रिफर्स कि आपका बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो गया है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अगर प्रॉब्लम आए मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू आउट व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन 39, which blood cell does not recognize, engulf and digest non-self particles? So the key to solve this question is आपको पता होना चाहिए what are non-self particles. Basically, they are recognized as foreign by your body, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। इम्यून सिस्टम नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड। एंड आपको पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के। ट्रिगर्ड, लेट्स सी। डज नॉट रिकॉग्नाइज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज ही तो आता है सबसे पहले। एंड इट टर्न्स इनटू योर एपीसी, APCs are your antigen presenting cells, and this process is known as antigen presentation. इसके खिलाफ फिर specific antibodies बनती हैं। Antigen presentation. Neutrophils. Again, neutrophils are the one which are involved in your phagocytic activity. Engulf means they're referring to phagocytosis. Phagocytosis के थ्रू ही बैक्टीरिया engulf होता है। एंड अभी जब हम रिवाइज कर रहे थे तो 5 टाइप्स ऑफ योर बैक्टीरिया, सॉरी वाइट ब्लड सेल्स, तो आई टोल्ड यू कि सिर्फ दो सेल्स हैं, दो वाइट ब्लड सेल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन phagocytic activity. That are your macrophages and your neutrophils, which is why neutrophils भी wrong है यहाँ पर। neutrophil neutrophil will recognize and engulf your non-self particles. Phagocytes, obviously phagocytes are the one which are carrying out your activity, and phagocytes कौन से हैं? Macrophages and neutrophils. So obviously your correct option is going to be T killer cell. ऐसे क्वेश्चन में ट्राई टू गिव योरसेल्फ रीजनिंग कि एक ऑप्शन गलत क्यों है, एक ऑप्शन करेक्ट क्यों है, एंड इफ दैट रीजनिंग सेटिस्फाइज योर क्वेश्चन तो फिर ही मार्क किया करो अपने आंसर को। क्वेश्चन 40, repeated infection with malaria will result in more effective immunity to malaria. What type of immunity is responsible for more effective immunity? किसमें बेसिकली देयर सेइंग कि अगर ज़्यादा मलेरिया होगा आपको तो ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी आपको मलेरिया के अगेंस्ट। एंड इम्यूनिटी किस तरह रिमेंबर की जाती है आपकी बॉडी के थ्रू? बाय मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स आर द वन विच आर रिमेंबरिंग योर इम्यून रिस्पॉन्स। तो कोई हिंट, कोई आइडिया क्या होगा आंसर? इसके लिए वी डिड अ क्वेश्चन, लेट मी ट्राई टू फाइंड इट, एक मिनट। यस, आर्टिफिशियल एक्टिव, वेरी गुड। बट एक टेबल भी है इसके लिए, जल्दी से हम वो रिकैप कर लेते हैं। ये रहा, ओके। So you have four type of immunities in your course. Artificial and passive immunity सबसे पहले तो ये आती है। Acquired immunity से आपका पूरा स्टार्ट होता है। Acquired immunity basically is immunity that develops during your lifetime. अब there are two type of immunities that can develop during your lifetime. एक तो active immunity हो गई and दूसरी is your passive immunity. Passive immunity. Now there are particular things which are giving you active and particular things which are giving you passive immunity. Passive immunity develops after you receive your antibodies from someone or somewhere else. It can either be natural या फिर active. Natural के सिर्फ दो cases हैं, active का भी एक ही particular case है according, sorry artificial का भी एक ही particular case है, artificial. So your passive immunity can either be natural or your artificial. In your natural antibodies are received from your mother. किस तरह? Across the placenta or in your breast milk. Whereas artificial passive immunity is obtained via your injection or infusion. Gamma globulin injection और infusion. Infusions क्या होते हैं? IV drops या IV drips कुछ लोग लगाते हैं,
So that is providing you artificial passive immunity in IV drop. एक ही जगह हम समराइज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ से कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है. Whereas if you go towards your active immunity, वो भी 2 चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है, natural and artificial. Active immunity develops in response to your infection या फिर vaccination. Natural. So natural active immunity develops in response to an infection, and artificial immunity, active immunity develops in response to your vaccination. जैसे फॉर एग्जांपल योर कोविड-19 वैक्सीन, उससे हमें मिल रही थी आर्टिफिशियल एंड एक्टिव इम्यूनिटी. दिस इज अ समरी फॉर योर इम्यूनिटी, कौन कौन सी चीज़ से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है.